Hello everyone, welcome back again. Standard 4 subject Vikas Maths Magic workbook, and we are doing chapter 10. Chapter name is Play with Patterns. So, this video is continuation of this chapter part 2. In my last video I already explained you this chapter till question number 3. So today I am going to start from question number 4. Do concentrate here. According to the pattern of 1, 2 and 3, arrange the letter P, Q, R in the box so that no letters come twice in any line. Here is given 1, 2 and 3 numbers and given the letters is P, Q, R. In this box is given the numbers, and in this box we are going to arrange it on a letters. So here I explain you. P means 1, Q means 2 and R means 3. Okay, so here is 1. So 1 means P, so write here P. Here is 2, 2 means Q, so write here Q. 3 means R, so write here R. Again here is 3, so then R. 1, 1 means P, so write here P. 2, 2 means Q, so write here Q. 2 again Q, 3 means R and 1 means P. So according to this, given this number P, Q, R, P means 1, Q means 2 and R means 3, you have to complete this box. Okay, so here hope you all understood how to complete it. P means 1, Q means 2 and R means 3. Like this here I explained you. So after this come on next question, 5 number. As per the given magical pattern, arrange the numbers 2 to 11 in such a way that's number on each line up to 20. That's number on each line up to 20. कितना होना चाहिए? Up to 20. So you can see here, is given 2. 2 each match with 4. 3 is not coloring. 7 is coloring and 1 also coloring and 6 also here is coloring. Okay, numbers we have to write 2 to 11 only up to 20. Okay, so 5 is here. So what we have to do, add जब हम लोग करेंगे तो उसका कितना लाइन आना चाहिए? 20, up to 20. Okay, so you can see here 2, 4 and then here is 1, 7, 6, 3, 4, 5. This number is given here. According to this we are going to do this one. So here is 6, 6 match with 4. Yes, I fill 4 and this match with 10. So add it 6, 4 and 10. कितना आया? 20, right? This number 11, 7, 2. Add it, it will come 20. Second number भी line में 20. Third line 3, 9, 8. Add all this, you will get 20. Okay, इस साइड से 20 हो गया. Now we will count from the slipping line. इस साइड से हम लोग काउंट करेंगे. 6, 11, 3, 20, 4, 7, 9. कितना हुआ? 20. 10, 2, 8. इट्स ऑल्सो 20. तो हमने इस तरह से नंबर्स को 2 to 11 के बिटवीन फिल किया है कि हम लोग स्टैंडिंग लाइन से काउंट करें या तो स्लीपिंग लाइन से. बोथ विल, व्हेन वी ऐड द लाइन इट विल कम 20. सो वी हैव टू यूज आवर माइंड एंड वी हैव टू फिल इट लाइक दिस, जिस तरह से टीचर ने फिल किया है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. See the question number 6. As per the magical triangle given below, arrange the following numbers 1 to 6 in a such a way that numbers on each side of the triangles add up 12. ये ट्राइंगल है, इसको जब हम लोग इच लाइन को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए. लाइक 3, 4, 2, देन आफ्टर 5, 1, 6. ओके, इच लाइन को हम लोग जो ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो कितना हम लोग का आना चाहिए? 12. और नंबर्स हम लोग कैसे फिल करेंगे?
नंबर से हम लोग फिल करेंगे 1 to 6 बिटवीन. ओके, सो लेट्स फिल इट. ये जो ट्राइंगल है, जब हमने इसे ऐड किया इस तरफ से तो इट विल कम 9, इस साइड से तो 9 एंड दिस साइड ऑल्सो 9. तो ये ट्राइंगल कितना बताता है? 9 बताता है. पर यहाँ हम लोग को कितना बताना है? यहाँ हम लोग को बताना है नेक्स्ट ट्राइंगल में 12. रिमेंबर दिस. सो 5 3 4, add all this, it will come 12. 5 3 11, 5 3 8 and 4 12. 5 1 6, it will also add this is come 12. 4 2 and 6, this is also 12. So like this you have to fill. यूज़ योर माइंड कि ऐड करने से एक नंबर को एक ही बार लिखना है 1 to 6 में, पर ऐड करने से हमारा कितना आना चाहिए? 12. सो लाइक दिस यू हैव टू मेक. Now see the 7 number. Complete the empty space on the remaining patterns using the rule of the given pattern. ये पैटर्न्स हम लोग को दिया गया है, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है एम्प्टी स्पेस है उसको हम लोग को फिल करना है इस रूल से. 80 को हम लोग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 30 प्लस 50. 30 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 10 एंड 20, इट्स इक्वल टू 30. 50 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 20 प्लस 30, सो इट विल कम 50. तो इस तरह से हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि ऐड करने से हमारा दिया हुआ नंबर ही आए. सो ये इज 100 200 एंड 300 इज गिवन हियर. तो 100 और 200 को ऐड करने से कितना आता है? 300. ओके, दिस इज कंप्लीट. नाउ दिस बॉक्स, सो 200 एंड 300, 500, राइट? नाउ ऐड दिस 2, 3 and 5, 800. Now it's completed. 50 60 and 70, तो 50 और 60 को ऐड करो 110, right here. 60 और 70 को ऐड करो 130, complete. Now this two box, add it to 110 and 130, it will come 240. So like this you have to fill. इस पैटर्न को हम लोग देख के हमने फिल किया. पैटर्न गिवन below here. Now see the next pattern of the question number 7. 100 को दो पार्ट में हमने सर्कल ने डिवाइड किया 40 और 60. 40 को दो पार्ट में 15 एंड 25. 60 को दो पार्ट में 25 एंड 35. 15 5 एंड 10 15. 25 10 एंड 15 25. 35 15 एंड 20 35. ओके. 48, सॉरी नीचे से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 एंड 5 इज गिवन हियर. तो 1 एंड 2, 3, 2 एंड 3, 5, 3 and 4, 7, 4 and 5, 9. Like this, do the upper one. 3 and 5, 8, 5 and 7, 12, 7 and 9, 16. Now this like this you have to add 8 and 12, 20, 12 and 16, 28. Now 20 and 28, 48. Like this you have to fill with add it. 8 number. Make 3 different pattern as per the rule is given here. Rules that we are going to follow 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So same pattern 11, 12, 13, 14 and 15 and 16 is we filled. So 11 plus 16, 27, 12 plus 15, 27, 13 plus 14, 27. So here also 16 plus 11, 27. सेम हमने क्या किया? अपोजिट में कर दिया. 15 को पहले ले लिया ने 12 को यहाँ लिख दिया. तो 15 प्लस 12 27, 14 प्लस 13 27. सो लाइक दिस यू हैव टू डू व्हाट द सेम. मेक 3 डिफरेंट पैटर्न. डिफरेंट पैटर्न हम लोग को बनाना है, पर सेम रूल्स हम लोग को फॉलो करना है सेम रूल्स में. तो हमने क्या किया? डिफरेंट पैटर्न में क्या किया? इसको अपोज कर दिया. पहले 16 ले लिया, फिर 11 ले लिया. सो लाइक दिस मेड द डिफरेंट पैटर्न. Now see the next one. 1, 2, 3 and 4 is given here. So I wrote here 5, 6, 7 and 8. Okay, it's make a 1 plus 4. 1 plus 4 is equal to 5. 2 plus 3 is equal to 5. Okay, now here we are going to add 5 plus 8. 5 plus 8, 13. 6 plus 7. 6 plus 7, 13. So both will comes the same addition.
Like this you have to change the number and do the addition as per same. Okay. Now see the 9 number. As per the rule of pattern given below, make a pattern with 5 numbers such that the sum of each row 5 more than the total sum of the row before it. Okay, 5 हम लोग को रो करना है 1 2 3 प्लस 6 2 3 4. पहले हम लोगों ने किससे स्टार्ट किया 1 से. तो 1 2 3 3 नंबर्स हमने लिया. अभी हम लोग 2 से स्टार्ट करें तो 2 3 4 9. फिर हम क्या करेंगे 3 3 4 5 12. ओके, हियर इज ऑल्सो 1 2 3 4 10. फिर हम लोग 2 स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 14. फिर हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6 18. सो 1 2 3 हम लोग सीरियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं. 1 से पहले स्टार्ट किया तो 1 को मैंने छोड़ दिया, फिर 2 से स्टार्ट किया, फिर 2 को छोड़ के 3 से स्टार्ट किया. ओके, लाइक दिस यू हैव टू एड इट. नाउ सी द फिल, हाउ टू फिल द पैटर्न. 1 2 3 4 5 कितना हुआ 50. 1 हो चुका है इसलिए 1 को हम लोग छोड़ देंगे. सेकेंड 2 3 4 5 6 इक्वल टू 20. देन आफ्टर 2 को छोड़ के हम लोग 3 में आते हैं 3 4 5 6 7 25. 3 को अब छोड़ देते हैं 4 में 4 5 6 7 8 30. 4 को अब छोड़ के 5 नंबर्स में 5 6 7 8 9 35. सो लाइक दिस यू हैव टू ऐड. एक एक नंबर को हम लोगों ने ऊपर पैटर्न में हम लोग को बताया गया कि नंबर को हम लोग ने छोड़ के आगे बढ़ना है. फर्स्ट लाइन में 1 लेना है, सेकेंड लाइन में 2 3 4 5 से स्टार्ट करना है. सो लाइक दिस फॉलो द पैटर्न एंड यू हैव टू फिल द बॉक्सेस. सो माय डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल क्वेश्चन नंबर 9. Rest of the chapter we will continue in our next part. Till then, bye bye, take care, stay safe, stay healthy. Bye everyone.